क्लिक कर त्याला. ब्लूटूथ तुझी एवढी चांगल्या वस्तू घेते खराब होतं. अगं तर बाई मी पण किती 8 महिने झाले यूज करते, रोज यूज करते. जॉईन कर डायरेक्ट येतं. अच्छा तुझं जस्ट वन माझ्या तसं नाही आलं. कनेक्ट होऊन जाशील ऑटोमॅटिक जसं आपण सगळं.
Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, sir. So I speak from here only. गर्ल्स किसी के पास हेडफोन है क्या? म्हणजे ऐकत राहायचं.
Good morning, everyone. We'll wait for another 5 minutes for all others to join in. अभी आवाज नहीं Doctor, can we switch on your video? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Children, this is a workshop for your mothers. Okay? So give the mobile to your parents.
Girls, come. Come fast. क्यों अरे यार यार क्यों बोल रहे हो क्यों ऐसे बोल रहे हो क्या अरे यार आपने बोला ना पीछे हो रहे क्या पीछे हो रहे इसलिए एक्स्ट्रा हो रहा है कितने मिनट का गेम है Hello. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. When you are born beautiful, it's God's gift to you. But when you make your life beautiful, it's your gift to God. A very warm morning to one and all present here, rather connected here. Respected guest, Dr. Rakhi Gajviye ma'am. Respected Principal, Jayashri Bhakya ma'am. Respected Principal, Sheila Pille ma'am, State Board. Respected Vice Principal, Gracie Anthony ma'am. Dear fellow friends, and all those who have accorded with us today for this special event. Corona pandemic has given us a golden message. No compromise with health, and especially women fraternity, not at all. And to add on, cherry on the cake, we are celebrating Cancer Awareness Week. H Raisoni Vidhyaniketan has arranged this webinar on Women Breast Cancer Awareness Program. And to enlighten us with precautionary measures, we have amongst us an eminent, towering personality, Dr. Rakhi Gajviye ma'am. We have something for Rakhi ma'am. We all know Rakhi ma'am as she has been our guest in POXO related meet also. Hearty welcome, dear Rakhi ma'am. Thank you so much. Dr. Rakhi Gajviye is a consultant gynecologist,
Madam has many flowers in her bouquet. She is currently a guide to CPS DGO students at Okri, Nagpur since 2017. She was nominated for Lokmat Healthcare Excellence Award in 2019. Madam is a social activist as she conducts numerous healthcare awareness programs for girls and women related health issues. Madam is also associated with many NGOs, schools, and colleges, and a life member of some professional bodies also. Rakhi Madam has contributed in writing a chapter on the book Distension Media on hysteroscopy. Also, Madam has published her 9 papers in national journals. So, can we have a big round of applause for Rakhi Ma'am? On behalf of H Raisoni Vidhyaniketan family, I cordially invite Dr. Rakhi Ma'am to take over the charge and unveil our ignorance. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I'm overwhelmed today. Good morning, everyone. I can see so many teachers out there. Thank you so much for joining in. Thank you all for having me here. And I would like to congratulate the H Raisoni Vidhyaniketan CBSE for conducting this very useful and very important workshop on breast awareness. So without much ado, I think I'll start with my screen sharing. I just want to confirm, can you see my screen? Anybody, please answer. Yeah? Yes, ma'am. Yes. We can see your screen. You can, Hello. you can see. Yes, yes. Ma'am, we can see you, not the screen. We You cannot can't see. see my screen. No. Okay, so I shall share it once again. Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay, now can you appreciate? Good morning, ma'am. Okay, I've shared my screen. If you can appreciate, please tell me that. Yes, ma'am, your screen is clear. Yes, ma'am. Okay. In that case, I shall start. I would like to thank the principal, Jayashree Bhake, madam, for having me here. Thank you so much, Jayashree. I love to give, awareness programs, and I've been doing this regularly on various topics. So today I'm going to talk about breast cancer awareness. And once you listen to this topic, after you listen to this topic, you all will come to know that there was so much about breast cancer which you were missing all these years and all these months and days.
So why do I need to make you all aware about breast cancer? See, awareness about breast cancer is very, very, very crucial. It is incredibly important because early detection can catch the disease when it is almost completely treatable. Once a patient comes to us and we find that she is in later stages, third stage, fourth stage for that matter, even second stage, it's really difficult for her to counsel that she might lose her life to this dreadful disease. So early detection is the key. So whenever I'm taking any awareness program, my main motto behind the presentation is how do I make people, women, aware when do you come to the doctor so that you're completely cured. Completely cured is what I always stress upon. How do you get that? Regular screenings. So regular screenings is the key. It will help pinpoint cancer in people who show no symptoms. So when we say screening, what does it actually mean? Screening means I am perfectly fine. I don't have any symptoms related to that particular disease, be it cancer breast, be it cancer esophagus, be it cancer of any, be it hypertension, be it diabetes, any disease out there. I do not have any symptoms, but I am regularly going to the doctor and getting myself checked, like we say, yearly medical checks. So similarly for breast cancer also, you have something, few tricks, few tips, which I shall be telling you today. I shall be sharing with you all today, so that you check it yourself without any symptoms also. Don't wait for the symptoms to appear. Once you have symptoms means you already have that disease. We want to catch you all, or we want to catch the patient in her pre-cancerous stage. That is the key to awareness of any disease. Okay. So being proactive about screening gives you the best odd for beating breast cancer when tumors are small and they have not spread to other regions of the body. Okay, so that is why I have chosen this topic of breast cancer, because it is completely avoidable. Avoidable. Okay, if we follow the things that I'm going to tell you. The most common cancer. The other reason why I've taken this, that out of the multiple cancers which we women have or can have, breast cancer tops the list. Few years back, breast cancer was not the first cancer for women. It was a cancer cervix. But over certain years, due to many causes, which I'm going to elaborate also, breast cancer is now topping the list of cancers in women. So we have to be very cautious, we have to be very careful, and we have to be proactive, like I've said. So the most common cancer in women is breast cancer. And if you look at the statistics, it is so alarming, and you'll all be really zapped to hear that 27% of women who are diagnosed with cancer of any kind, they have 27% of them have breast cancer. 1 out of 28 women will suffer from this disease. If, for example, we are 60 here sitting, 2 of us are going to get this disease in our future. So the statistics is really very bad, very saddening, that out of 31 lady in India, this is Indian statistics I'm talking about, 1 in 30 women, 1 in around 28 women are going to suffer from this disease. And not only that, 50 to 60% of women who are diagnosed with breast cancer in India die within a year. This is a reality. Why? Because they all come to us in later stages, third stage and fourth stages, when the cancer is already spread all your body. Where does the problem lie? I've told you in my first slide. What is the problem? The problem is awareness. Most of us do not know. To tell you frankly, quite a few number of women have not seen their own breast. So the problem starts right here. If you have not seen it, not checked it, you won't be able to come to us in early stages. So there has to be something. What is that? Awareness. So the lack of awareness about this dreadful disease is what makes it difficult, is what makes it
dreadful is what makes it 60% of women who come to us will die within a year of diagnosis of breast cancer. So this lack of awareness is what I want to, take away from you all. And it's early diagnosis, of course. If you know a few symptoms, you'll definitely get aware. And if you are aware of it, you'll reach to the doctor in early stages. And this is something which relates to you people, because I can, Jayashree had told me yesterday that there are teachers who are from like 25, 30, 35, 40, so-called young women for for any kind of cancer. Someone who is 35 doesn't even have in her dreams that she can get breast cancer. But this is for you all who are young and sitting in there in front. See, if I'm 50 now, or whoever's 50 plus, they already have in their mind, ki आता माझं वय झालंय, I can get any kind of cancer anytime. But breast cancer is getting more common these days in younger women. So in India, breast cancer, which predominantly otherwise affects women above 50, is now striking young women and even teenage girls. So whoever is 18 plus needs to listen to this, so that she is aware of the disease and she checks herself at regular intervals. This is my favorite slide for the reason that I have just said that it is now striking young women also. Angelina Jolie, when she was 37, 37 is hardly any age for cancer. She got her both breasts removed, because she found that she has mutation in her genes which are pro for breast cancer in the future. So she got both her breasts removed. So now advancement is there to such an extent that you can even check into your blood, do I have a chance of getting breast cancer in the future? Okay, this is US. She got both her breasts removed before she got breast cancer, because she never wanted it. She knew that once she gets it, that she might succumb to this disease. So with this introduction, ladies and ladies, I start my presentation. This is a diagram of breast, and as you all can see, breast is majorly made of fat, and that makes it difficult for you all to check your breast. I shall be dealing with that in just a while. What are the causes or the risk factors of breast cancer? First causes or risk factor is family history. So there are few malignancies which run in family. If your mother has, your maushi has, somebody in your maternal side has got a history of breast cancer, you have a higher chances of getting breast cancer in the future. Okay, gene mutation, like I said for Angelina. If there is a gene mutation which is detected in your body, you have a higher chances. Yeah, all's well. I'm audible, isn't it? I have not lost you, I guess. Yes, ma'am, we can hear you. Okay, Yeah. yeah, because sometimes it happens that I lose you all and I don't come to know about that. Okay, so first cause was family history, like I told you. Late childbearing. Now, what is happening that these young girls who are studying, first they're going for graduation, post graduation, career is utmost for them, and they want to earn something before they get into the married life and before they get a child. So during this process, what takes a backseat is the child. And what do they lose? They lose their age. So by the time she's mentally prepared to have a child, she's 35 plus. So late childbearing is a new risk factor, which was not there earlier. So why breast cancer is topping the list? Because of these reasons. Earlier, women used to have children at 20 years, 21 years. Now 40 also, most of them are not ready. 35, they're just saying, I'm making up my mind, madam. Maybe in a year or two, I might have a child. So late childbearing is a cause for younger women for getting this breast cancer. Early menstruation, late menopause, we can't do anything to this. It is natural. The women, girls who get early menses and who have a late menopause
have little higher chances of getting this breast cancer. Obesity is a common factor for all kinds of cancers, so it is a common factor. It's a common factor for breast cancer as well. Increased breast density, it's related to obesity. If you are obese, you have big breast. Big breast people have, a percent or 2% more chances of getting breast cancer. Prolonged use of contraceptives. Yes, this is what I want. This something about oral contraceptives I want to tell with you all, because many of you must be taking these pills. Now, oral pills, that is Garbhanirodha Goya, they are good. Okay, they are doing good to us by not having unwanted pregnancies. But the overuse of these oral contraceptives, there are patients Madam, who are, yeah, hello, एक्सक्यूज मी मैम yes, मैम हमारे कुछ स्टाफ मैम इंग्लिश नॉन टीचिंग है जो ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझ पाते, तो क्या मैम okay, आप कुछ okay, हिंदी में? यस मैम, definitely. थैंक यू सो मच मैम. I'll take in Hindi, absolutely. थैंक यू If सो you मच मैम. want me to take it again, नो मैम, नो मैम. I'm yet to come to my important. मैं अब तक मेरा जो important है वो आने की हूँ, तो don't worry, I'll take in Hindi, right? So थैंक यू सो मच मैम. बड़े जिनके भी बड़े ब्रेस्ट रहते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से खुद को या डॉक्टर के पास चेक करना है. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में मैं बता रही थी. गर्भनिरोधक गोलियां अच्छी हैं, पर अगर हम उनको ज्यादा साल, मेरे पास पेशेंट्स हैं जो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के 10 सालों से टैबलेट्स ले रहे हैं. सो अगर आप ले रहे हो गोलियां 6 महीने में, यू गो टू योर गाइड, टेल हर, मैडम मैं ये गोलियां ले रही हूँ, 6 महीने हो गए, क्या मैं और 6 महीने बढ़ा सकती हूँ? फिर 6 महीने बाद, मैडम 1 साल हो गया, क्या मैं और 6? So under a doctor's supervision, you can take this medicine safely. Okay. Hormone replacement therapy after menopause, more in abroad, more in foreign countries. Hello? Hello? Can you not hear me? Now it is clear. Yes or no? yes. You all can hear me. Okay, because someone said, Madam, your voice is not audible. Okay. And the 8th point, which is alcohol intake, these young girls, teenagers, they are now doing a lot of night parties. They're doing pub, and the pub culture so much in these young girls. Most of the family women like me who have daughters, who are young daughters, are scared of this thing. मेरी बेटी अभी कॉलेज जा रही है, and I'm scared she's going with her friends, boozing out late night, coming back 4 o'clock, and this is happening so much in India. See, we are following foreign culture, but not for good. We follow them for all bad. That's what I just hate. We can follow them for advancement, we can follow them for so many good things they're doing, but we follow them for all these things. So for young girls, I want to tell, or for the mothers of young girls, I want to tell you all that please check when does your daughter come back, is she into these bad habits? Because this is the time, teenager, this is the time, 2021, if she falls into this trap, it's not good for her career, not good for her health, and breast cancer also. So these are the common causes which are very relevant in our setting. Now, like I told you, it is becoming very common in young women. What are the causes for breast cancer in young women? The causes are not breastfeeding, because she's now having late child. Somehow the mindset of the girls who are delivering with us these days have a mindset that they do not want to breastfeed for many reasons. Mera figure kharab ho jayega, this and that. So, and they do not want to take pains to start the breastfeeding. बच्चा नहीं पी रहा है, वो पकड़ नहीं रहा है, and so many reasons. So I want to stress upon you, mothers of these young girls who are going to be mothers later, your daughters are going to be mothers later. Please insist them that career is important, no doubt. Earning money is important, no doubt. But beta, please एक बच्चा आप जल्दी से जल्दी before 30 साल की उम्र से पहले आपकी बेटी, आपकी बहू ने अपना पहला बच्चा ले लेना चाहिए. 30 साल की उम्र से पहले. करियर इज इम्पॉर्टेंट, पर आपको पहला बच्चा 30 साल की उम्र से पहले लेना है. और जब भी आप बच्चा पैदा करते हो तो ब्रेस्ट फीडिंग इज अ बून नॉट ओनली टू द बच्चू बट ऑल्सो टू द मदर. तो वरदान है माँ के लिए और बच्चे दोनों के लिए. जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड दी,
लिया है उनके कम चांसेस रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। डिलेड प्रेगनेंसी मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्ट्रेस एट वर्क, इट्स अंडरस्टूड, कैरियर वुमेन है सब लोग, कॉलेज उनको ऑफिस करना पड़ रहा है, घर का भी संभालना पड़ रहा है। और अभी भी इंडियन कल्चर में प्रॉब्लम ये है कि अगर एक वर्किंग लेडी है, बिलीव मी, उसको घर का भी सारा काम करना पड़ रहा है जो अदरवाइज वो आंटियां जो हाउस वाइव्स है या लेडीज वो हाउस वाइव्स वो जो कर रही है वो भी सब करना पड़ रहा है। एडेड स्कूल करना है, कॉलेज करना है, या फिर उनका जॉब करना है, वहां का प्रेशर, वर्क प्रेशर इज रियली मच फॉर women. So they are handling both the fronts, they are tackling both the fronts, and in this process इतना stress उनको है, घर का stress, work का stress, this stress is now making them more prone to breast cancer. So stress is another new cause for breast cancer in younger career. Air pollution, again common problem with all kinds. Lack of sleep, stress इतना ज्यादा है उसकी वजह से, या वर्कलोड इतना ज्यादा है उसकी वजह से, लैक ऑफ स्लीप है, लैक ऑफ स्लीप से इम्यूनिटी, पता है आपको स्लीप से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सो डोंट फॉरगेट दैट, टेक अ गुड साउंड स्लीप, it will keep you away from many problems. So a good sleep is really must. So now let's talk about prevention. प्रिवेंशन कैसे करेंगे? जो भी कॉजेज है वो सब हमको अवॉइड करना है। कुछ अनअवॉइडेबल कॉजेज है जैसे फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री वाले कॉजेज के लिए क्या करेंगे? हम लोग खुद को चेक करते रहेंगे, और जो कॉजेज हम अवॉइड कर सकते हैं हमको अवॉइड करेंगे, सिंपल एज दैट। सो नो अल्कोहल, अ बिग नो टू स्मोकिंग, अल्ट्रावायलेट रेज, बहुत सारे माइक्रोवेव और इतने सारे गैजेट्स हैं आजकल जो हमको अल्ट्रावायलेट यूवी रेज दे रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप, microwaves, they all are giving us so many rays. Exercise, yes, exercise, diet, good diet, keeping yourself stress free. How do you do that? Doing a good stress management. Yes, a good stress management, because you have to do household, you have to manage your kids, you have to manage your family, you have to manage your job, you have to perform the best there, you have to give time to a kid. So you have you're multi-talented now, and multiple work you have to do in the entire day. So you are bound to get stress. What is important to how do you manage that stress? Stress management zaruri hai. Control your weight. And last 2 points are early diagnosis. And what do you do for early diagnosis? Preventive examination. So screening for breast cancer. बिकॉज स्क्रीनिंग का, ब्रेस्ट कैंसर का जो स्क्रीनिंग है उसका 50% आपको खुद करना है। that's the beauty of this thing, that 50% आप खुद ही अपने आप को रिलीव कर सकते हो। yes, this month I'm fine, this month I'm fine, this year I'm fine as far as my breast is concerned. So screening, breast self-examination, number 1, clinical examination and sonomammography. 4th point, 5th point, you need not know. 3 points आपको पता होने चाहिए, उसमें से भी जिसको मैंने read किया है, that is very important as far as you all are concerned. So let's talk about breast self check, which is also known as breast self exam, right? Why? Because early detection saves. So I've been repeatedly saying this, we have to detect ourselves early. So when we talk about breast self-examination, you have to know the difference between normal and abnormal. If you don't know, अगर आपको normal नहीं पता तो आप abnormal नहीं catch कर पाओगे। और abnormal में आपको जब तक मैं आपके brain में जब तक bombard नहीं करूँगी तब तक your brain won't know. And if your brain doesn't know, your eyes and your fingers cannot see or feel it. So breast self-check, I'll be discussing under these 5 heads. Who all should do it? When should you do it? Which positions you have to do it? What should you look for? And how should you do it? So first is what? Who all should do it? Mother, sister, daughter, and even you. That means everybody. Every girl, every lady, every mother, every sister, everybody out there has to check herself or do her own breast self-examination. सबको करना है. When should you do it? कब करना है आपको? 18 साल की उम्र के बाद. See? 18 years is the age now for breast cancer. So जो कोई भी 18 साल, so whoever has a daughter who is into her 19, please उसको भी आप सिखाइए. So 18 साल की उम्र के बाद लाइफ टाइम आपको चेक करना है, महीने में 1 बार करना है,
मेंसेस होने के बाद करना है, बिकॉज मेंसेस के पहले हमारे ब्रेस्ट थोड़े टाइट हो जाते हैं हार्मोन चेंजेस की वजह से, और तब हम उसको चेक नहीं कर सकते, पेनफुल रहते हैं, और इसलिए वजह से हम तब चेक नहीं कर सकते। तो हम कब चेक करेंगे? मेंसेस के बाद। सो 18 साल की उम्र के बाद एवरी वुमन एवरी मंथ आफ्टर योर मेंसेस आर ओवर। एंड जिनको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज और मेनोपॉज, जिनके पीरियड्स बंद हो गए, वो कब चेक करेंगे? तो वो एक डेट फिक्स कर लेंगे महीने का, फर्स्ट दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी। सो जिनके मेंसेस नहीं है वो मंथ में एक दिन फिक्स करेंगे, जैसे मेनोपॉज हो गया या प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। सो प्रेग्नेंट लेडीज को भी अपने आप को 9 महीनों में चेक करते रहना है। नेक्स्ट इज कौन से पोजिशन में आपको ब्रेस्ट चेक करने हैं खुद के। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर 2 पोजिशन दिख रहे हैं आपको, एक है लाइंग डाउन पोजिशन और स्टैंडिंग। रिमेंबर, ब्रेस्ट चेक आप दोनों पोजिशन में करोगे, स्टैंडिंग भी जरूरी है, लाइंग डाउन भी जरूरी है। What should you look for? Yes, very important, isn't it? And before I tell you what is bad or the signs of breast cancer, let me tell you what is normal, right? So what एक normal breast दिखता कैसा है? Normal breast दोनों symmetrical होने चाहिए, equal, 19-20 is normal. ब्रेस्ट थोड़े से साइज पर 19-20, देयर शुड नॉट बी एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा। प्लीज गो चेक योरसेल्फ इफ इट्स लाइक दैट। देयर शुड बी फुल, राउंडेड, स्मूथ इज इंपॉर्टेंट। कहीं भी रुगेसिटी नहीं होनी चाहिए, कहीं डिंपल नहीं होना चाहिए, तो स्मूथ होना चाहिए आपके ब्रेस्ट, विदाउट एनी डिंपल, विदाउट एनी रिट्रैक्शंस मीन्स गड्ढा, और विदाउट एनी मासेस, मतलब कोई मास या गड्ढा नहीं होनी चाहिए। सो स्मूथ होने चाहिए, राउंडेड होने चाहिए, और ये सारी चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। वैस्कुलर पैटर्न, मतलब इफ यू ऑल हैव सीन योर ब्रेस्ट, उस पर एक ब्लू लाइंस रहते हैं, दैट इज वेसल, नर्स है वो, तो वो नॉर्मल है, डोंट वरी अबाउट दैट। निपल्स कैसे नॉर्मल है ना? इवर्टेड निपल्स मतलब जो निपल्स बाहर निकले हुए हैं वो नॉर्मल निपल्स है। अगर आपके निपल, एक निपल कोई है तो प्लीज वो भी खतरे का निशान हो सकता है, सो उसको भी आप नोट करें, दिखा दें, ठीक है? तो निपल्स कैसे नॉर्मल है? बाहर निकले हुए निपल्स नॉर्मल है। एंड एक्सिला मतलब खाकी आपण मराठीत म्हणतो, उसको भी हमको चेक करना है, मैं बताऊंगी, I'll tell you about that also. So I've told you normal क्या है, let's talk about abnormal. So you have to remember, मुझे जब भी मैं अपने ब्रेस्ट चेक कर रही हूँ, I have to look for all these things, you know. कोई मुझे विजिबल लंप, कुछ लंप या गठान मुझे दिख रही है क्या? निपल मेरा बाहर था, अब धीरे 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 अंदर इवर्टेड था, इन्वर्टेड हो रहा है क्या? जो मेरा ब्रेस्ट का कलर हमेशा था उससे कुछ कलर चेंज हो गया है क्या? कहीं कोई गड्ढा या शाहरुख खान वाले डिंपल्स दिख रहे हैं क्या मुझे? निपल से कोई डिस्चार्ज, स्पेशली ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है क्या? राइट? So these are the things which you have to remember. How should I do it? This is very important. I want to ask, am I seen in your मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? Because मुझे अभी मॉडल से सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। Yes, ma'am. मैं Yes. दिख रही हूँ ना? Okay, okay. Yes, So ma'am. if I'm Yes. seen, yeah. Okay, thank you so much. So now, last point is, how should you do it? So all women out there, all teachers out there, this is very important. Just mug it up. So these things you have to remember, which are shown in this diagram, you know. You can see that she is standing, and in the fourth you can see she's lying down. Before you start checking, you have to know 3 things. 3 चीजें तुमको याद रखनी है। वो 3 चीजें क्या है कि जब भी हम अपना खुद का ब्रेस्ट चेक कर रहे हैं, हमको ये फिंगर्स आपको दिख रहे हैं, मेरे फिंगर्स। So this is known Yes, as the ma'am. tip of fingers. It is known as the pulp. I hope mothers are listening to me and not the kids. The tip of the finger, this is known as pulp of the finger. Okay, so you have to remember कि आप अपने ब्रेस्ट इसके थ्रू चेक करोगे, आप ऐसे चेक नहीं करोगे, राइट? आप उसको ब्रेस्ट को अपने उंगलियों के बीच नहीं दबाओगे, आपको पल्प से, बेड ऑफ द फिंगर्स से चेक करना है उसको। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2, जब भी आप एक कोई ब्रेस्ट चेक कर रहे हो, उस ब्रेस्ट का हाथ आपके सर के ऊपर होना चाहिए, चाहे आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हो, चाहे आप लेटे हुए पोजीशन में कर रहे हो। ये दूसरा प्री रिक्वेजिट है। और तीसरा प्री रिक्वेजिट है, जब भी आप ब्रेस्ट कर रहे हो चेक, प्लीज अपने एक्झिला को या फिर खाकीला चेक करायला प्लीज विसरू नका। ते तितकंच महत्वाचं आहे जितकं तुमचं ब्रेस्ट चेक महत्वाचं आहे, ठीक आहे? तर या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत। आणि अजून एक गोष्ट ती म्हणजे यूज डिफरंट प्रेशर लेवल्स।
ये क्यों जरूरी है? बिकॉज सबके ब्रेस्ट साइज अलग रहते हैं, किसी के छोटे, किसी के बड़े, किसी के बहुत बड़े. सो अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ योर, तुम्हारे खुद के ब्रेस्ट का कितना डेप्थ है, उस हिसाब से आपको प्रेशर लेवल्स आपका खुद का सिलेक्ट करना है. मेरे ज्यादा हैवी ब्रेस्ट है, मैं थोड़ा ज्यादा डीप पैल्पेट करूंगी. मेरे बहुत ही छोटे हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं. सो रिमेंबर दिस फोर्थ पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ योर ब्रेस्ट, अकॉर्डिंग टू द बल्क ऑफ योर ब्रेस्ट, आपको प्रेशर लेवल वैसा डिसाइड करना है. ओके, सो एवरी मंथ मेंसेस के बाद, आपके मेंसेस खत्म हो गए, 5th डे 6th डे, चलो आपको याद रखना है पहले दिन से मुझे. सो डायरी जिसमें आप मंथली सारा किराना या जो भी भरते हो, आप कहीं ना कहीं तो आप मंथली आपकी सारी चीजें लिखते हो, वहां ये भी लिखना है आपको कि मुझे मेंसेस के बाद ये चेक करना है 7 डे 8 डे. सो आज मेरा 7 डे है, तो मैं क्या करूंगी, नहाने से पहले, बिकॉज नहाती मैं रोज हूँ ना, तो वो टाइम मैं यूटिलाइज करूंगी. नहाने टाइम आज मुझे 10 मिनट अपने ब्रेस्ट को देने हैं महीने में एक बार. राइट, नॉट अ बिग डील एट ऑल, नॉट अ बिग डील. When I'm getting into the bathroom, सब घर में वॉशरूम्स में आजकल मिरर्स रहते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने ब्रेस्ट को देखूंगी. तो प्लीज रिमेंबर, जब भी आप अपने ब्रेस्ट चेक कर रहे हो, सबसे पहले आप खड़े पोजीशन में करोगे. और जब आप खड़े पोजीशन में करोगे तो आप दो चीजें करोगे, आप अपने ब्रेस्ट को देखोगे और उसके बाद चेक भी करोगे. ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट. तो कैसे देखूंगी? व्हेन आई सी माय ब्रेस्ट लाइक दिस, मुझे बस 50% ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, मुझे नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगी? व्हाट डू आई डू? I'll stand in front of the mirror. That way I can see the entire breast properly. So मैं खुद के breast mirror में देखूंगी. So what I'm going to do when I'm into my washroom, मैं mirror के सामने खड़ी होंगी. In 3 positions I'll see myself. See the second figure. Okay, examine your breast in the mirror with your arms down, up and your hips. That means इन तीनों position में आपके अपने breast को आपको देखना है. हाथ ऊपर, on your hips and hands down. ठीक है, क्या देखोगे? जो कुछ मैंने सिखाया. कहीं कोई डिम्पल है, कहीं रैश है, जो मेरा कलर है ब्रेस्ट का नॉर्मल, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, रेडनेस तो नहीं आ रहा है, ब्राउन तो नहीं, मेरे निपल जो इवर्टेड थे कहीं अंदर तो नहीं दिख रहे हैं, कहीं कोई डिम्पल है, कहीं मास है, टेक्सचर स्मूथ तो नहीं है, रुगेसिटी तो नहीं आ गया, रफनेस तो नहीं आ गया है कहीं, वो ऑफ कोर्स पैल्पेशन में आएगा. तो आप ये सारी चीजें तीनों पोस्टर में देखोगे. ठीक है, उसके बाद सीइंग इज ओवर. नाउ टेक अ शावर. टेक अ शावर मीन्स आंगोड़, नॉर्मल आंगोड़ जो आप करते हो. आप सोप यूज कर रहे हो, पानी यूज कर रहे हो. बेस्ट वे टू पैल्पेट योर ब्रेस्ट, जस्ट राइट मीडियम. तो आपने क्या करना है, आपण युजली चेअर किंवा ह्याच्यावर बसतो ना, तर बसून साबण आणि पाण्याने ब्रेस्ट आपलं आता चेक करायचंय. दॅट इज नोन एज पॅल्पेशन. सो आय हॅव टोल्ड यू ऑलरेडी, यूज युअर पल्प. Now what you're going to do is, see, this is the model, I hope you can see this. What you're now going to do is circular motions. Don't forget this. Pulp, circular motions. Start from one side. धीरे धीरे आप चेक कर रहे हो और प्रेस भी कर रहे हो. सो यू डूइंग 2 motions at one time. आप सर्कुलर मोशंस भी कर रहे हो, प्रेस भी कर रहे हो साथ में. और क्या फील कर रहे हो? कोई गिटली, कोई दाना मेरी उंगलियों के बीच में स्लिप हो रहा है क्या? सो पहले क्या होगा, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तो आपको अपने ब्रेस्ट नॉर्मली कैसे फील हो रहे हैं वो आप सीखोगे. Because like I told you, most of the women, including, forget rural, urban also, don't know how their breast look like or how their breast feels like. So पहले 2-3 महीने तो आपको पता चलेगा कि मेरे नॉर्मल ब्रेस्ट कैसे फील होते हैं. बिकॉज मैंने आपको बताया वो फैट से बने, फॅट आर ग्लोब्युल्स. सो दे कॅन ऑल फील लाईक गाठी 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 वाटू शकतात. पण सुरुवातीचे महिने तुम्हाला हे कळेल की मला माझं ब्रेस्ट कसं फील होतंय. तर 2-3 महिने शिकायला लागेल की माझे ब्रेस्ट कसे फील होतात ते. तो प्रेसिंग as well as round circle movement. Circular movement should not be forgotten. Okay, तभी तो अगर कोई गठान है तो वो आपकी उंगलियों के नीचे स्लिप होगी अगर आप उसको प्रेस करोगे. एट द सेम टाइम आप सर्कुलर मूवमेंट, तो आपने यहाँ से शुरू किया, प्रेस, सर्कुलर मूवमेंट, गो फॉरवर्ड, प्रेस, सर्कुलर मूवमेंट, नो कुछ नहीं फील हुआ, फिर आगे जाऊंगी, ब्रेस्ट इज राउंड, तो आपका पूरा सर्कल कैसे होगा? राउंड सर्कल होगा. नहीं, कुछ फील नहीं हो रहा है, एंड you end to the point where you had started. Okay, nothing is there, till you're very sure की मला खरंच काही कळलं नाहीये. आणि if you have not understood, we are always there to teach you how you do that.
ठीक है, तर्पणमाला का ही समझ लें। सो आपने ये पूरा राउंड सर्कल चेक हो गया। क्या दो चीजें बच गई है? निप्पल एरिया, डोंट फॉरगेट दैट। निप्पल एरिया को भी आपको वही प्रेशर, इतना प्रेशर जो पेनफुल ना हो, कीप दैट इन माइंड। प्रेशर, सर्कुलर मूवमेंट्स, कुछ फील हो रहे हैं? नहीं हो रहे। ओके, सो एंटायर ब्रेस्ट हैज बीन चेक्ड बाय यू ओन in the best way, where there are very less chances of missing out anything. Now don't forget your axilla. So with those fingers now आप अपने axilla को भी circular movements में और pressure के साथ चेक करने वाले हो। यहाँ भी आपको चेक करना है, मुझे कोई नोट फील हो रहा है क्या, कोई मुझे गठन फील हो रही है क्या? I hope I made you very clear, because this was the most important thing in my presentation today. So if anybody wants me to tell you all again, I am there for you. Okay, so now you have checked it, all 3 points, all around nipple area and also your axilla. So now you finished. अंगूर झाली है, आप बाहर आ रहे हो। बाहर आपको ध्यान रखना है कि अब आप बेड पे लेटोगे, और जो आपने मूवमेंट्स, जो आपने प्रेशर मूवमेंट्स आपने बेड के साबुन और पानी से किए थे, वो आप अब लेटे हुए भी करोगे। क्योंकि कभी कभी स्टैंडिंग में हमको एक आधी गठान मिस हो गई तो वो लाइन में पता चलती है, कोई कभी लाइन वाली मिस हो गई तो वो स्टैंडिंग और सिटिंग में फील हो जाती है। तो लाइंग डाउन में भी आप वैसे ऑल अराउंड निपल एरिया, एक्सेलर एरिया, नॉट टू फॉरगेट। जो ब्रेस्ट आप चेक कर रहे हो, उस ब्रेस्ट का हाथ आपके शोल्डर के ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप चेक कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज, ऑपोजिट हाथ से चेक करोगे, मतलब राइट हैंड से आप लेफ्ट ब्रेस्ट चेक करोगे, लेफ्ट हैंड से आप राइट ब्रेस्ट चेक करोगे। तो अब मैं अगर मेरा राइट ब्रेस्ट चेक कर रही हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड से करूंगी, और मेरा हाथ जो जिस ब्रेस्ट को चेक करूं वो हाथ। सो दिस इज द राइट पोजिशन। मेरा हाथ ऊपर गया, शोल्डर के ऊपर, लेफ्ट हैंड से मैं चेक कर लूं माई पल्प। I'll go around the entire breast. Don't forget the nipple area. Don't forget the axillary area to palpate for any lump out there. Okay, and remember one thing: seeing your breast is equally important like feeling your breast. Palpation is equally important like inspection. मतलब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप इंस्पेक्शन भूल जाओ, पैल्पेशन करो, वो भी गलत है। और क्योंकि कलर चेंज आपको फील कभी नहीं होगा, साइज चेंजेस कभी नहीं फील होंगे, छोटा सा डिंपल है कभी भी आपको हो सकता है फील ना हो। तो बहुत सारी चीजें देखने वाली है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट, दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू, एंड दे आर मैंडेटरी, आपको करना ही है सारे स्टेप्स। तो आपने देख लिया, आपने पैल्पेट कर लिया, पैल्पेट आपने खड़े होके कर लिया, लाइन डाउन में कर लिया, चलो मुझे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं फील हुआ है। लास्ट में क्या करूंगी, जो निपल है उसको स्क्वीज करके देखूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, कि मुझे कोई डिस्चार्ज, जैसे मैंने आपको कहा था ब्लड डिस्चार्ज तो नहीं निकल रहा है, तो मैं स्क्वीज करके देखूंगी। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को मिल्क रहता है वो नॉर्मल है, तो मुझे स्क्वीज करना है, पर माइंड यू बहुत पेनफुल ना हो, जितना आपको बेयर हो रहा है उतना आप उसको स्क्वीज करोगे। ओके, सो I've told you use your pads. मैंने आपको ये सारे prerequisites already बता दिए हैं। Do not use the tips of the fingers. Use different pressure levels. Your goal is to feel different depths of the breast by using different levels of pressure to feel the entire breast tissue. Take your time. Don't rush. To start off with, थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज आपको वो याद करना है कि मुझे क्या क्या स्टेप्स करने हैं। बट बिलीव मी, 3rd month यू विल बी एक्सपर्ट हो जाओगे आप। और जहां भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, सी जब आप नॉर्मल देखोगे या अपना मेरा ब्रेस्ट नॉर्मल कैसा है वो पता करोगे, then you'll be able to catch the abnormality in your breast at early stage, and that's what you want to do. So here are the advantages. Like I've been telling you, a breast exam that you do for your breast awareness helps you understand the normal look. पहले आपको normal समझना है, तो आपको abnormal जल्दी catch होगा. And feel of your breast, normal look and feel, inspection and palpation. तो आपको पहले तो ये समझना है कि वो मेरे normal breast कैसे हैं, मेरे normal breast दिखते कैसे हैं और feel कैसे हैं. If you notice a change in your breast that seems abnormal, or if you notice one breast is different when I compare it with the other, you can report to your doctor. Consult a doctor if you notice any changes or any irregular. Any doubt, we are always there. Okay, so that was it, breast self check, and that was very important. I hope you all have understood it very, very, very nicely. Next is clinical examination. Now what happens if I teach you
50% of my job is done. That yes, now I know that she has learnt it. अगर उसको कुछ problem है वो definitely मेरे पास आएगी. But that is not it, you know. अगर breast self सब कुछ होता था तो बहुत सारे diseases miss नहीं होते थे. So you have to check your breast once a month, no doubt about it. At the same time, you have to check your breast with your doctor every 6 months. If you're young, maybe a year, but please do that. मतलब स्क्रीनिंग में अब ये है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है पर फिर भी मैं डॉक्टर के पास हर साल या हर 6 महीने डॉक्टर से ब्रेस्ट चेक कराऊंगी. मैं हर महीने कर रही हूँ मैडम, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ? एम आई मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग? एम आई डूइंग माई चेक करेक्टली? So you have to do so. Screening में अब doctor check is also important every 6 months if you're 40 plus, and every yearly if you're maybe less than 30-35, you can check with your doctor once a year. Sono mammography, I've added this point. Okay, clinical breast exam, check for lumps and physical. This is the clinical examination part which we are going to check. And the third screening is sonomammography. आप में से सबको पता होगा कि मैमोग्राफी नाम का कोई एक्सरे रहता है ना? मैमोग्राफी नाम का कोई एक्सरे रहता है, और आप में से सबको ये लगता है कि जब मुझे कुछ तकलीफ होगी तब मुझे मैमोग्राफी बताएंगे. You won't believe if I write mammography to my patients, first thing they ask me is, मैडम मुझे कैंसर है क्या? आपने मुझे कैंसर का एक्सरे लिखा है. This is in their mind, imbibe so much कि mammography is equivalent to cancer. No, it is not like that. तो all of them ask me, मैडम आपने ये एक्सरे क्यों लिखा? मुझे किसी ने बोला है कि कैंसर हो तो एक्सरे होता है. नो, इट इज नाउ अ रूटीन स्क्रीनिंग प्रोसीजर. आप अपना बीपी चेक कर रहे हो हर साल, हर महीने में आप अपना पूरा ईसीजी, कार्डियो, इको, एंड यू आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिकल चेक्स ईच ईयर, isn't it? हर साल आप एक पूरा आपका थरो मेडिकल चेक कर रहे हो. Why do you forget your breast? Why do you forget your gynec tests? Please don't do that, because these are the cancers of women which show in later stages because of the sheer charam. They are so much, women are so much afraid of going to the doctors, getting themselves checked. ब्रेस्ट चेक करने में शर्माती है, इंटरनल चेकअप ले रहे शर्माती है, और जो प्रॉब्लम्स उनके हैं उनको धीरे 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 तब तक वो सहन करती रहती है जब तक वो लेटर स्टेजेस में ना आ जाए. सो डोंट डू दैट. डोंट फील अशेम्ड ऑफ गेटिंग योरसेल्फ चेक. सो जैसे आपका रूटीन मेडिकल हर ईयर रहता है जिसमें आप कोलेस्ट्रॉल से लेके हजारों चीजें, किडनी से लेके लिवर सब चेक कर रहे हो, प्लीज इनकॉर्पोरेट दिस also. A check by doctor of your breast, a check or a mammogram also. So mammogram is now into preventive, into screening. So हम आजकल साल में एक बार all women who are 40 years and beyond should get their mammogram every year without any symptoms. So please get that out of your mind कि अगर मुझे पेन है तो ही मेरा मैमो होगा, अगर मुझे लंप है तो ही मेरा मैमोग्राम. अगर आपको प्रोएक्टिव रहना है as far as breast cancer is concerned, please get your breast mammogram done every year even without any symptoms. Because early detection of breast cancer increases survival. This is the best part of it. You remember I told you that 60% of women are going to die in a year once they're diagnosed of breast cancer because they come late. Now 95% of the women are going to survive. So that's the best part of this breast self check, of the clinical check by doctors, and of the mammography if you're doing it regularly. And early detection fights breast cancer. We have to detect it early, and that's the only way breast cancer, which is now topping the list, should go down in India and abroad, everywhere, entire globe, I would say. Okay. Otherwise, अगर आपको breast cancer है, so see what can happen to you. आपकी सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, and all this is really very painful. Having your breast surgery done, फिर उसके बाद इतने सारे light अपन म्हणतो, radiations, and they are also very very painful. Chemotherapy, that's another big body के लिए stressful injections. Hormone therapy, अगर हम early stage में आ रहे हैं डॉक्टर के पास, so nothing like it. You can even save your breast, because if the patient is coming to us in early stage, which is known as किसी भी कैंसर के stages हैं 0, 1, 2, 3 and all,
पर 0 से पहले भी है ना प्री कैंसर जिसको कहते हैं. So if we can catch a patient in pre-cancer, nothing like it. She has not even turned into cancer, so don't worry. She'll save her breast. Only that small lump will be taken out, and she'll be happy rest of her life. Prevention tips: revision, begin breast self-check and clinical breast examination at 18 years. Do it regularly. That's more important. Generally, your baseline mammo is done at 35 with annual mammograms beginning at the age of 40 years. This is very important. So all beautiful ladies out there, go home and examine your breast right away, and please do it regularly. Don't think 2 महीने मैंने चेक कर लिया, 3rd महीने मैं नहीं चेक करूंगी, बहुत हो गया, अब नहीं कर रही हूँ. Regularly, because you have been doing so many other things regularly. आप मेकअप कर रहे हो, आप लिपस्टिक सब कुछ तो कर ही रहे हैं. So why can't we just invest 10 minutes, in a month to check your own breast? Let's defeat breast cancer together. Thank you so much. Thank you, Jayashree, once again. I'm really very happy that you are here. Thank you so much, Rakhi ma'am. I think I'm audible. Thank you. Yeah. Very clearly. It has been quite an elaborate session. And I could see certain non-teaching staff also nodding their heads. That means they have also understood that English passion. Yeah, I saw to it that मैंने actually सबको समझ भी आए. बहुत medical terms इसलिए use नहीं किए, because अगर मैं उसको बहुत academic रखूंगी तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा और सब 15 मिनट में सो जाएंगे. So मैंने उसको बहुत simplify करके बताया ताकि हर किसी को समझ में आए कि मैं खुद और मेरी बेटी या मैं जिनको जानती हूँ वो सबको I should be able to teach. So I made it very simple. मैंने खोल दिया. Yeah, and that's the reason you did not lose us. There was one question, Rakhi ma'am. You talked about mammography. What is the time for the mammography? Is it like there is any restriction that it has to be after 5 days of your menses or before 5 days of your menses? Yes. All, for that matter, all X-rays, जितने भी एक्सरे हैं, एक्सरे चेस्ट, एक्सरे एब्डोमेन, मैमोग्राफी, कुछ भी एक्सरेज औरतों ने मेंसेस के बाद ही करने चाहिए. उसके 2 रीजंस है. कभी कभी गलती से हम प्रेग्नेंट रहते हैं, यंग गर्ल्स है ना, 35 में प्रेग्नेंट रहते हैं और वो प्रेगनेंसी में खुद का एक्सरे करा लेते हैं, तो उससे बच्चा खराब हो सकता है. तो एक्सरे हो, मैमोग्राफी इज ऑल्सो एन एक्सरे, वो भी एक तरह का एक्सरे ही रहता है. वो भी सारे एक्सरेज के तरह औरतों को अपने मेंसेस के बाद ही कराना चाहिए. सो 5th डे, 6th डे, 7th डे. और दूसरा रीजन ये है कि जैसे मैंने कहा, मेंसेस के पहले हमारे ब्रेस्ट थोड़े हैवी रहते हैं और पेनफुल रहते हैं. मैमोग्राफी करते टाइम हमारे ब्रेस्ट मशीन के अगेंस्ट प्रेस किए जाते हैं, और अगर हम प्री मेंसेस करेंगे तो वो एक्सरे बहुत पेनफुल रहता है. वैसे भी थोड़ा पेनफुल रहता है मैमोग्राम, बट मेंसेस के पहले और ज्यादा पेनफुल हो जाता है, तो मेंसेस के बाद ही करते हैं. That is a rule dictated for us to write an X-ray only after she has finished her menses. Thank you, ma'am. Any other questions? Any questions? No, I want to take a feedback from one of the teachers. कोई भी जो मुझे ये बता सके, did I do justice and have I taught you something which you will take along or keep along rest of your life? Yes, ma'am. I just want to know. Yes, ma'am. Have I done justice to this awareness program? Ma'am, I want to ask one query, ma'am. Actually, my mother, she has gone for a breast mammography. After that, she said that after 3-4 years continuously, she was saying that she gets pain. Okay. After doing that mammography. So will they have it, this pain, everybody, only what causes this pain? Right. See, take for example, कहीं का भी पेन हो, ब्रेस्ट छोड़ के हाथ का, ब्रेस्ट का, चेस्ट का, स्पेशली चेस्ट पेन में हमको सबसे पहले किस चीज का डर आता है? लेफ्ट में है तो हार्ट अटैक तो नहीं है मुझे, है ना. हम भूल जाते हैं कि वह मसल्स है, उसका मस्कुलर पेन भी हो सकता है या ब्रेस्ट पेन भी हो सकता है. सिमिलरली अगर ब्रेस्ट पेन है किसी को
तो डोंट फॉरगेट कि कोई और रीजंस की वजह से तो वहाँ पेन नहीं हो रहा है मुझे, सो यू हैव टू रूल आउट हार्ट प्रॉब्लम, उनको रूल आउट करना है, मस्कुलर पेन तो नहीं है, ये रूल आउट करना है। अगर ये दोनों नहीं है, फिर भी अगर उनको ब्रेस्ट पेन हो रहा है और उनके रेगुलरली मैमोग्राम्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो डोंट वरी, दे कैन बी हार्मोनल ऑल्सो। मेनोपॉज में थोड़े क्या ज्यादा हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, तो हार्मोनल पेन इज ऑल्सो वन बिग कंफ्यूजिंग फैक्टर। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ये पेन मेरा हार्मोन्स का है या कोई ब्रेस्ट कैंसर का है, हार्मोन्स का है। सो आई थिंक अगर तुम्हारी मदर को वो पेन, मैमोग्राम्स नॉर्मल है, सोनोमैमोग्राम का मतलब रहता है हम लोग ब्रेस्ट की सोनोग्राफी भी साथ में करते हैं और मैमोग्राफी भी साथ में करते हैं, तो अगर वो नॉर्मल है तो मोस्टली वो या तो मस्कुलर होगा या तो कार्डियक होगा या फिर हार्मोनल हो सकता है। ठीक है, जो टैबलेट्स देके कवर हो जाएगा 3 मंथ्स में। थैंक यू। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो ये दोबारा हो सकता है क्या आफ्टर रेडिएशन एंड केमोथेरेपी ऑल्सो? हाँ, एक्चुअली कैसा है कि अगर मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो मेरा क्या ट्रीटमेंट हुआ है। अगर मेरा बस लंप निकाला है, ओके, बस लंप निकाला है, ब्रेस्ट वही है और मैंने कीमो नहीं लिया, तो मुझे डेफिनेटली हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम, अगर मेरा ब्रेस्ट निकल गया है, you won't believe, one of my very very dear relative, she got her breast removed last year. She's just 39 and she said, राखी ताई, how in the entire world, मैं सोच भी नहीं सकती थी 39 में मेरा एक ब्रेस्ट निकल गया। सो उसका तो हमको पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ा था। नाउ वी आर फाइटिंग कि उसको कहीं सेकंड में ब्रेस्ट में ना हो जाए, because those breast cancer cells are moving in your blood. तो इस वजह से आपको सेकंड ब्रेस्ट का मैमोग्राफी हर साल करते रहना है कि कहीं मेरे सेकंड ब्रेस्ट में तो कैच नहीं। तो पॉसिबल है, अगर आपने एक साइड किया है, कीमो भी ले लिए सारे, फिर भी आपको चेकअप बहुत जरूरी है। और लाइफ लॉन्ग एक टैबलेट खानी पड़ती है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को, ताकि दूसरे ब्रेस्ट में ना। Ma'am, is it hereditary? Yes, I told you my first causative factor was family. It is hereditary. It is not necessarily, but it is hereditary. Genes, because we have got our mother's genes, no? Breast cancer, women cancer में 2 cancers आपको याद रखने हैं, ovarian cancer and breast cancer. ये दोनों कोरिलेटेड है। ब्रेस्ट कैंसर वालों को हम हर साल कहीं इसको ओवेरियन कैंसर तो नहीं हो रहा है वो भी चेक करते हैं, तो ये दोनों फैमिलियल है। My mother has it, I have more chances of getting it. Remember that. It is hereditary. I may not get one feedback, ma'am, from my side and from ma'am also, that really this is an eye-opener session for, yes, this is not only for all of us, but all the didis, non-teaching staffs, and all the parents who are listening from the home. So I think that this is very beneficial, and in each and every day we are going to look it for. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, can I just ask you a question, please? One question to you, please. Can I ask you one question, ma'am? Yeah, please go on. I'm a teacher from Sanjuba School. मेरे रिलेटिव्स में उसकी ब्रेस्ट के ऊपर मैम एक थोड़ा सा फोड़ा हुआ था, उसमें से पस निकला है बहुत सारा। इज इट नीड टू चेक फॉर ब्रेस्ट कैंसर? देखो, अगर उसको ब्रेस्ट में फोड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर को दिखाओगे, है ना? तो डॉक्टर सब चेक करेगा, नीडल डाल के चेक करेगा, कैंसर सेल वो सब चेक करेंगे, सादा पस का फोड़ा है वो सब चेक करें। अगर उसको फोड़ा है तो देन यू डोंट वरी, डॉक्टर विल डू एवरीथिंग बिकॉज यू रीच अ डॉक्टर नाउ। ठीक है, जैसे हमको बॉडी में हाँ, जैसे हमको स्किन में कहीं भी फोड़े आते हैं, वैसे ब्रेस्ट पर भी आ सकते हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसके भी आ सकते हैं। तो मोस्टली तो वो कैंसर का नहीं होना चाहिए। उसका पस निकालो या चीरा लगा के वो ठीक हो जाता है, 10 दिन में हील हो जाता है टोटली, तो वो नहीं होएगा मोस्टली, डोंट वरी। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। I want to make an earnest request to all the women teachers out there कि अगर आप किसी NGO से attached हो and you all want me to present this to those women also, please let me know because I don't mind giving this to. So any NGO you all are attached to, किसी का जो भी attached हो, please let me know. I'll be more than happy to give this presentation. Rakhi ma'am, can I ask you a question, please?
Yeah. You spoke about clinical examination. Yes. Person in my family who used to go for this annual checkup every year. Yeah. In the month of March, and this March she missed it out, and she herself is a doctor, and ironically she's a doctor, and so this March she missed it out due to COVID. That and in the month of July she was detected with breast cancer. So what is this actually the duration of clinical checkup? Should it be 6 months or annually? I told you for younger can go in a year. No, she's 50 above. She has to go every 6 months, no doubt about that. And if you have a family history, mind you, आप 2 महीने 3 महीने में भी गए तो no big deal. अगर आपको family history और आप 50 plus हो गए हो, तो now be very careful. After 3 months 4 months you can go and get yourself checked. अगर strong family history है और age बहुत ज़्यादा है, because कैंसर का जो ग्रोथ है वो सबके बॉडी में अलग रह सकता है. किसी का ग्रोथ साल भर में भी ना पता चले और कोई 6 मंथ्स के भी इसमें बहुत बड़ा कैंसर बन गया सकता है. सो फैमिली हिस्ट्री अगर स्ट्रांग है तो आपको 50 साल के बाद तो रेगुलर और थोड़े फ्रीक्वेंट चेकअप्स करने बेटर रहेंगे. और अगर सेल्फ चेक करोगे ना प्रॉपरली द वे आई हैव टॉट यू, जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हो ना, when you teach a lesson, what do? Repeat and re-repeat. I do that because I want you all to just mug it up and do it regularly. That's the main key to this, right? Because of COVID, so much, go to the doctor. Yeah. Okay. We sign off now. What do you say? We sign off. Yes. One more question, I Yes. Okay. Hello, Okay. ma'am. Ma'am, one reason given by you, that is early menopause. यदि अर्ली मेनोपॉज हुआ एंड ऑटोमेटिक नहीं हुआ और यदि ऑपरेशन करके यूट्रस निकाला गया तो इज देयर चांसेस? No, चांसेस? No, not at all. तो स्पेशल कुछ मेनोपॉज का मतलब मैं बताती हूँ तुमको क्या रहता है. मेनोपॉज का मतलब पीरियड्स जाना है, करेक्ट है. पीरियड्स किससे होते हैं? यूट्रस से नहीं आते हैं पीरियड्स, ओवरी से आते हैं. सो इट इज द ओवरी also. Yes. Ovary also. Ovary has been removed. Yes. हाँ. Yes. So जिनके ओवरी निकल गए ना, मैमोग्राफी तो आप हर साल करोगे ही फिर भी, ठीक है. Yes. I told you there is a link between ovarian cancer and breast cancer. अगर ओवरी निकल गए तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं. Okay. इसका वो Thank you, ma'am. For that matter, let me tell you, जिनको breast cancer है, like this relative of mine, she's 40 now. So we are now talking about removing her both ovaries. I told you, I gave an example of Angelina Jolie. So what did she do? Okay. She got both her breast removed, and the next year she got both her ovaries also removed. Ovaries, yes. Okay. Yes. Because she was prone to breast, she becomes more prone to ovarian cancer. So next year she got both her ovaries also removed, and that's what we are going to do to my relative now. हम लोग अब इस साल उसके दोनों ovaries निकालेंगे. Okay. So that उसको ovarian cancer होने का चांस नहीं रहेगा. और फिर ओवरी निकाली तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए, लाइक आई टोल्ड यू, यू हैव टू टेक टैबलेट्स रेगुलरली. मैम अगर सपोज ब्रेस्ट कैंसर की बात, जो हम रेडिएशंस लेते हैं, जो रेडिएशन लेते हैं उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मीन्स आगे? बहुत होते हैं. सब चीज से साइड इफेक्ट होते हैं. सर्जरी से होते हैं, रेडिएशन से बहुत ज्यादा. पूरी स्किन से जल जाती है, पता है तुम लोगों को? पूरी स्किन जल जाती है और बहुत हीट बढ़ जाती है. बिकॉज आपको एक रेडिएशन मशीन के अंदर आपको उतने मिनट रहना है, एंड इट इज थ्रोइंग सो मेनी रेडिएशंस. तो बहुत साइड इफेक्ट्स है. फ्यू ऑफ द विमेन गेट आउट, वो रेडिएशन थिएटर से ही बाहर निकल जाते हैं, अगली बार जाते ही नहीं है रेडिएशन के लिए. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इफ यू हैव इट देन यू हैव टू अंडरगो सो मेनी थिंग्स. द रेडिएशन इज वेरी पेनफुल. Hello. Yeah. Thank you, Rakhi ma'am. It was really a very eye-opening and necessary, I would say, because all the teachers are nodding. Yeah. Yes, ma'am. बहुत ज़रूरी था ये.
और हम लोग लेडीज़ यूजुअली ना हम लोग मिस कर जाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया है. आई होप दीदीज भी बैठे हैं, दे ऑल्सो अंडरस्टूड इट वेरी वेल. On behalf of Raisoni Vidhyaniketan, I extend my heartfelt thank you, a big thank you to you, Rakhi ma'am, for sparing your valuable time for us and illumining us with the precautionary measures. जो इतनी अच्छी तरह से समझाया आपने, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, वो हमारे माइंड में अभी वो फिट बैठ गया है. And a big thank you to our principal ma'am also, Jayashree Bhake. And without her support, I think हमको ये chance नहीं मिलता सीखने का and guidance. This event would have been impossible without her. I would also like to thank all our technical team, Manish sir and all, for their unflinching support. Lastly, thank you to all my dear sisters, those who have joined, connected with us, for gracing the occasion and making it a successful. Thank you, ma'am. Thank you so very much. Yeah, I want to make a point. Before we sign off. The second common cancer in women is cancer cervix. You must have heard cervical cancer. Okay. So I am doing awareness about that also. And there is a vaccine for elderly women out there jinki betiyan hai. There's a wonderful vaccine to prevent cervical cancer, the second common cancer in women. So maybe next month or so, whenever you all have time, after your kids' exams and all are over, we can take up one session on cervical cancer also. Okay? Sure. Yes. Thank you, Jayashree. Thank you so much. Thank you so much, Could ma'am. not join in live, have been seeing this through YouTube. So we are trying to spread across to maximum people possible. And thank you for all the participants who entered in. And thank you for the wonderful technical team, Sudhir sir and William sir and all, who helped us reaching out so many people. Thank you. Thank you so much. Thank you. God bless. Thank you. Thank you. You can sign off. It's a meeting done. We have 100+ participants.